यदि आप आसानी से नाराज़ हो जाते हैं या अत्यधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं तो संभवतः ये आपके लिए नहीं है। हम इसे वास्तविक बनाए रखने के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसे अपनी जोखिम पर देखें। हालांकि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि धूम्रपान और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। Hello, welcome to yet again another episode of Uncensored with Duyu Tabio. And आप लोगों ने disclaimer तो पढ़ लिया है, सुन लिया है, लेकिन I want to say it once again. If you're easily offended, please ये show को skip करो and then please ये show को आप अपना family के साथ मत देखना. पिछले episode में बहुत complain आया था कि family के साथ देख रहा था, थोड़ा गाली भी आया था. But requesting each and every one of you, please do not watch this show with your family. I have a guest. I'll start with, I have high regards for her because I have literally seen her grow into a very woman of substance, into a very strong woman. And she is none other than Miss Nadik Nabam, former Miss Arunachal. And she is also a very accomplished badminton player, affiliated to Arunachal State Badminton Association. Nadik, welcome to the show. Thank you so much, sir, for having me here. And then introduction में ज़्यादा ही कुछ तारीफ कर दिया लगा. No. I really appreciate you for what you have achieved. First question that I would want to put up is, Arunachal मेरे हिसाब में मुझे लगता है कि अरुणाचल में यहाँ के औरतों को, लड़कियों को बाकी स्टेट भी मेन इंडियन, स्पेशली मेन इंडियन से बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिलता है यहाँ पे. I want to ask you a straight question. How difficult it is to be a woman here in Arunachal? One of the easiest question to be answered. Actually, in Arunachal, I've never felt that कि यहाँ पे equality नहीं मिलता है, that it's difficult to survive here. छोटा सा अभी तक हमको इतना कुछ डिफरेंस हमको नहीं लगा. जब उल्टा बड़ा होके जब बाहर गया, then जब when we grow we learn things and then तब थोड़ा aware होने लगता है. Then I started to थोड़ा realize हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है, discrimination नाम का भी चीज़ होता है, equality के लिए भी women are fighting. Otherwise, where I was born and brought up, there it's like no one will say कि आप लड़का या फिर लड़की है. You'll be given the same task to do. और घर में भी maybe I'm grateful to my parents for bringing up in that way. क्योंकि भाई बहन they don't differentiate ऐसा कि जंगल जाना सब जाओ, घर का काम करने सब करो. That was in that surrounding I have been brought up. And then जो not only my home but बस्ती में भी ऐसा ही था. But yeah, overall I can see that our state is one of the safest state for women. And then yes, equality, so obviously I can see it, but I feel like that there are still some sector where women need to show up. So maybe if I'd say in long run, maybe we'll get to see women in every sector coming up. So basically, Hoping for the you future best agree future. that यहाँ पे अरुणाचल में बाकी स्टेट के comparatively यहाँ पे हम औरतों को, लड़कियों को ज़्यादा लिबर्टी मिलता है. Yeah, yes, I do. Thank you for saying that. Because a lot of pseudo families have come up these days. But nevertheless, what was your thought? You recently gave up your crown, Oh. the prestigious Miss Arunachal crown. What was your exact thought when you were passing it on to the next winner? Her name is Miss Taduluni. Yeah. Right? So when you were passing it on, the crown, what was your exact thought that was running in your head? I was actually grateful that I had such a fulfilling journey. I wasn't at all sad or बिल्कुल भी कुछ अलग thought आ ही नहीं रहा था. I was just grateful for myself that the reign that I did, I felt like that I did not इतना नहीं था कि दूसरा के लिए हमको जीना. I lived it for myself. I wanted to do, I did things that I wanted to do. And then without that platform, it wouldn't have been possible. So I was more of so grateful. And then जब अगर आप मेरा photos देखिएगा तो या फिर videos अगर कुछ देखिएगा तो you'll see that sense of happiness you'll be able to see. It was so apparent there. तो वो था. And then yeah, थोड़ा pass करते समय को थोड़ा तो दुख लगा था. But I was happy for her at the same time that this year someone again, all the trio of them will get exposure और फिर 3 लोग फिर आगे बढ़ेंगे. So I was happy for them. That's it. So थोड़ा सा तो दुख लगा होगा अंदर. थोड़ा सा पता नहीं दुख तो थोड़ा सा था, बट दुख से ज्यादा तो थोड़ा खुशी था कि बहुत अच्छा समय रेन गया. and I was really grateful. That's it. I want to let people know because I've seen Nadik in 2 editions. I had hosted you in Seppa. Yeah.
and you had come to the top five finalists. She was a top five finalist, and later you did not win that year. But then Yeah. later when she came, um, I will be very honest. I did not realize कि आप ना देखे उस समय में उस pageant उस edition में. But when I saw you the next edition, when you had come to Namsai edition, and I could literally see this. Who's this girl? Like she's always standing out from the other 19 contestants, in the sense that you looked more confident, and I think you are a true example of how a woman can achieve, how a person, irrespective of gender, can achieve within a year. I really feel you must have worked really, really hard on your personality, and you must have worked really hard to like give yourself another chance. And no wonder you won that pageant that year. So really appreciate you for that. I could literally see it that ये बंदी बहुत मेहनत करके आया है. इतना तारीफ कर दिया नर्वस ही हो गया. No, I'm being very honest, but genuinely appreciating you for that. And has the title of Miss Arunachal, like, did you ever feel that you lost that liberty, that freedom that you were before, that you enjoyed before you had become a Miss Arunachal? During the course of 1 year, you were under contract of Miss Arunachal organization. You definitely, without, even if we want to agree or not, you had become a public figure. Yeah. So did you feel that the pressure of being Miss Arunachal, you could not live carefree, you could not do things that you wanted to do before your reign as Miss Arunachal? Did you feel the pressure? Pressure, but I knew before coming to the pageant, I knew that what responsibilities are going to come to you, and then since you'll be going to that field, तो आपका expectations एक रहता ही है, सबका ऊपर, like मेरा ऊपर सब expectations रहता ही है. So I was like mentally prepared, and then I knew that if I become Miss Arunachal, तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है. So I was full prepared, and then maybe जैसे आप बोलेंगे 1 साल, तो पूरा 1 साल तो ready कर ही लिया था अपना आपको, तो आके इतना कुछ नहीं लगा कि I felt I had no freedom, because जो भी I wanted to do, like all the committee members, they supported. तो हम कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसमें हमको लगा कि नहीं होता क्या, नहीं करना चाहिए, but I'm doing that. I did not feel that. तो इतना sense of liberty, I don't think so. I missed it. I had that liberty. In fact, आप जो चीज़ अकेले accomplish नहीं कर सकता है, ये pageant में आके with the committee members, I used to be, doubtful, should I do or not, but they are so supportive, they're so cooperative. They're like, करो कुछ नहीं, doesn't matter. So you get a family. So in fact, it was really nice. It was really a good journey, and then I grew a lot throughout this journey as well. Nice to hear that. During your reign, I think we saw that in updates. I think a lot of people have confusion about why did you go to New York? You're a New York return, so like that's one of the top cities in the world. Like उसका story थोड़ा सा पता, because even I am actually confused till date. कि I'm pretty sure you did not go out there for vacation. Yes, you I had did not. work to do there. So what was it exactly? If you could shortly describe us, tell us about it. In brief, but इतना लोग पूछ लिया होगा अभी तक, but still if you're confused, and then I believe many of them are even confused till date. तो वही था कि as everyone know as of now, अभी तक जो नादा को जानता है सबको पता है कि I come from a humble background, and that my father is a farmer. I too am a farmer, बोलने से भी हो जाएगा. तो ऐसा करके when I was pursuing my bachelor's, then I got to learn about the concept of FPCs and FPOs, where the government they actually were more focusing on agriculture sector. तो ऐसा करके and then from then on थोड़ा government से support मिलके I kind of got to learn कि अच्छा how FPO and FPCs it works, and how it can benefit economically to our state. तो ये सब थोड़ा पता हो के पापा के साथ थोड़ा exhibitions जाके agri products, पर खेती तो बस खेती अपना खाओ, that was our mentality, right? But then later on realized that no, it can play a very major role in our state, and for someone's progress also. तो फिर ऐसा करते करते, and then before becoming Miss Arunachal, I went for so many exhibitions for related to agri products को जाके हम लोग promote करो ऐसा.
तो that was the thing, and then maybe luckily trade and commerce department उन लोगों की तरफ से भी एक exhibition में गया था. Maybe they saw something in me. Actually, first of all, they were surprised कि such a young lady and promoting agriculture. It's rare to see, of course. It's rare to see, right? तो ऐसा था कि you're doing a really good job in future. If कुछ होता है तो we'll definitely would love to give you more exposure so that you can talk more about it. तो ऐसा करके ही था. And then right after I became Miss Arunachal Trade and Commerce Department की तरफ से I got this opportunity कि आप जाए and जो भी agri products था हमारा स्टेट का I went and represented that. तो that was the thing in brief. That's what I did. It's not that कि Miss Arunachal Basically, you represented our state. Yeah, yes, I did We that. didn't know that. I never knew that. People still have confusion related to that. But in future also, if I get these kind of opportunities, then I would love to grab that. But kudos to you, man. Like seriously, like you yourself have said that even the department was surprised that such a young girl, Yeah. like showing a keen interest towards agriculture. yes, yeah. Congratulations, and really proud of what you did. Really अभी proud तक of that. तो फिलहाल वही है, but as a state I believe that I feel like agriculture and then tourism, that can only I believe that's a really safest way to economy को boost करने के लिए. और ज़्यादातर तो फिलहाल तो as of now I can see that, तो इसीलिए I'm focusing more on tourism if possible. If I'll get the opportunity to how to say, promote our tourism, I would do that, and then agriculture obviously. Definitely And you'll do that. entrepreneurship, for sure, I would love to learn also. अगर किसी को हमको मौका देना है सीखो करके, तो please, I'm here to learn and grow. So Yeah. let's come back to the crux and the concept of this show. Yeah. This is called Uncensored. The show का title ही Uncensored है. So now I'm letting you be yourself. Okay? Yeah. Who Nadek Nabam is. You can be unfiltered. You can be uncensored. Don't fear about the repercussions. लोग पूरा दुनिया judge करता है. But this is one show where I want to give my guests Yeah. the opportunity to speak their hearts out. So I think your reign as Miss Arunachal, we all know we are close to each other. We have worked together. We have been in the organization together, Yeah. and we see comments coming for you. The level of trolls that you got. Yeah. कोई नहीं देखा होगा अभी तक जितना हम देखा है. So how like was it difficult for you that did you feel that pressure? एक घर पे कोई एक बंदा बंदी ऐसे ही बैठा हुआ है फेक अकाउंट से ओरिजिनल अकाउंट से आपको गाली पे गाली दे रहा है. Like if you had to give one message to them, like what would it be? Get a life. Get a purpose in life. वही बोलेगा, because a person who is so focused in their life, I don't think so they'll ever have the time to True, look true. into someone's life. True. तो जब वो लोग ऐसा बोलते हैं, I feel like that इतना हम जिंदगी में इतना कुछ करने के लिए है, इतना कुछ करने के लिए है, जितना तक तो ना, actually I never used to pay attention to that notifications or anything. मैं अभी भी आप देखिएगा फोन खोल के देखा, हम पूरा every एक भी notification आपको नहीं मिलेगा, कॉल तक का भी notification नहीं मिलेगा. I've made sure that mechanism should not control me, in fact, because this is my life, तो ये मेरा control में रहना चाहिए. So I've made sure that negativity हमसे दूरी रहो करके. I don't used to see, but ऐसा हो गया था कि my family members, they were more concerned. तो comments के बारे में उन लोग से ही सुनने ज़्यादा मिलता था. That's like हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. You don't be so नहीं, आप खराब मत पाइए मेरे लिए. आप लोग बस अपना ख्याल रखिए. That was the only thing. And then I usually हम देखता ही नहीं, और कभी कभी अगर दिख जाता तो I only used to think कि इतना फ्री समय कैसे हो सकता है आप लोगों के पास, because to earn even a penny, आप एक ये टी शर्ट खरीदने के लिए भी आपको कितना ब्लड एंड स्वेट जाता है. वी नो 24/7 उसमें से ऐसा होता था कि कभी कभी तो नहीं सो के भी इतना कुछ करके, because पैसा जब आप खुद का मेहनत से कमाता है, it's really difficult to earn that money, right? तो 1 रुपये भी अगर आता है तो आई एम हैप्पी विद दैट मनी, बिकॉज आई नो दैट हम सही रास्ता से कमा रहे हैं. तो वो सही रास्ते से पैसा कमाने के लिए तकलीफ होता है, समय नहीं मिलता है. एंड पीपल हियर दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम. To cut you short, आप अपना दिल से बताओ. या Why did you receive so much hatred, मे बी so much trolls? Like आप एक अपना एक personal introspection कभी करके देखा कि मतलब why? It was, I knew it in first place. हम ऐसा था कि maybe I may not make it because I don't fit into the beauty standards that's prevalent here in our state. Very good looking girl. Why would you say that? No, I used to think that, and then अभी पता नहीं कैसे करके थोड़ा स्किन भी थोड़ा अभी फेयर हो गया है, but before back then
I was really ऐसा था कि हम बिल्कुल भी स्किन कॉन्शियस था ही नहीं पहले से, बिकॉज पेरेंट्स भी हमको ऐसा कभी बोला ही नहीं कि यू नीड टू बी मोर अट्रैक्टिव, और कभी अपना आउटर अपीयरेंस को ज़्यादा ध्यान दो. दे वर मोर इनटू मोल्डिंग आवर कैरेक्टर, मोर इनटू बिल्डिंग आवर पर्सनैलिटी, के हाउ कैन यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ ना. वो वाला चीज़ था, इतना आउटर अपीयरेंस का भी ध्यान दिया ही नहीं. तो क्लास 12 तक तो आई वाज लाइक आई डिडंट नो व्हाट फेस वर्सेस क्या है, कुछ पता ही नहीं था. आई वाज सो इनटू बिल्डिंग माय कैरेक्टर ना, अपना आपको कुछ सीखना है, स्किल्स बिल्डअप करना है. दैट वाज आई वाज बिजी विद. तो फिर ऐसा करके लेटर आई रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ दैट जैसे कि yeah, it's definitely, it's not that I was not hygienic, I was always, but ऐसा था कि I had that dark tone skin ना, तो ऐसा करके बहुत ऐसा था, oh तुम तो you're this, you're that, ये on this people are there who are racist, we cannot ignore that. So I don't know, तो जो भी हमको बोला है, maybe they are racist only. I don't, they couldn't accept me. I don't know. I don't know why, but it's all right. I'm not here to impress everyone. I'm here to live my life. I'm here to make my parents proud, and those who care for me, I'll try my level best to make them happy and proud. That's it. I'll live a fulfilling life, but yeah. And Very I want to tell this to the audience. घर बैठे जज करना बहुत इजी है ना. Yeah, किसी को सोशल मीडिया में टाइप कर दो, कीबोर्ड वॉरियर बनो. But then I want to tell this to the people, my audience. If you only knew who Nadek is as a person, because I know her since the last 2 years when she joined Miss Arunachal, and after she won, and then over the course of 1 year working with her, I'll describe you in one word. You're very honest, and like you already said, you do not have time for negativity. Yes. And I think you keep your heart in your mouth. Yeah, या I दिल do. में जो है मुंह में में है, निकल जाता है. And I don't feel like you have time किसी को खराब बोलने के लिए भी. I think you are very focused in your Yes, keeping what I yourself have to happy, do. right? Yes, yeah, And if जो trolls करता है नादे को, I mean, if you could only meet her, be with her, spend time with her, get to know her, then only you'll know. अरे सच में यार ये लड़की तो बहुत सही है. It's- No, because I Yeah. not trying to impress others, not trying to flatter you, but then that's what I genuinely feel. Yeah. And क्योंकि एक होता है ना किसी आदमी के साथ किसी whoever person it is, जिसके साथ रहने से you get that Yes, positivity, that positive energy. So I always got that. Like I've never seen you having mood swings. You've always always Been very happy, jolly all the jolly, time, bubbly. yeah. अपने ही धुन में पगला काम करते हैं. yeah, yes. So yeah, and now I'm letting you, because why I invited you here is because I wanted to know a perspective of a woman living in a society. Starting में आप बोला कि we are very liberal. Yeah, yes. अरुणाचल का society बहुत liberal है, but then of course it's a patriarchal society. वो तो society, उपाय नहीं है. That has been since civilization. I don't know how it'll change, but then hopefully if women come forward. Yeah. You as a woman, you said like it's very liberal. Like since you were Miss Arunachal and you were a public figure, you are still a public figure. Do you get men sliding into your DMs, sending you sleazy messages? Like, do you experience that as a woman? Forget about you being Miss Arunachal. We do. Just Yes. just being a girl. Yeah, just being a girl, even before becoming Miss Arunachal, लड़की है, if you're there on social media, then definitely people, अब DP देख के ही आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है क्या नहीं है. तो उसके बाद एक बार limelight में आने के बाद तो obviously it doubles. So but I just ignored. That's the best way to cope up with these kind of messages. I Basically, you get sleazy messages, yeah, right? we do. See, I won't lie. See, if Yeah, we do. if I like someone, I'll definitely say hello. But then sleazy message लिखने के लिए that इतना तक तो मेरा common sense है कि to write a sleazy message to someone. हाँ, वो अलग बात है कि if I get reciprocation and Yeah. during the course of time healthy flirting होने के बाद, that's a different case. But then, yeah, let me come back. See, हम लोगों का समय में when I was in school, वहाँ पे क्या होता था कि लड़की और लड़का आर्गुमेंट हो रहा होगा और लड़की जो लड़का से थोड़ा सा मतलब आर्गुमेंट जीत रहा है, their last resort would be रंडी साला. जीतने नहीं सक रहे, आर्गुमेंट नहीं सक रहे, डायरेक्ट रंडी साला बोल के character assassination में आ जाता है. And why I'm saying this is because I feel I'm lucky, fortunate enough to know people like you, other like women of substance, be it former Miss Arunachal, social media influencers, musicians, artists. So I am in this field. I get to know and come across a lot of strong-headed women.
So पिछले बार I think it's not been even a month. So हमको मेरा एक someone I know very closely, who's an amazing person. So she had put up उसका डैड का पिताजी का वो वीडियो डाला था वो स्टोरीज में, एंड वो हमको दिखाया, सर देखो ना हम लोगों को ऐसा ऐसा मैसेज आता है, एंड देन वहां पे क्या लिखा है, रंडी का बाप. कम ऑन. हम लोग का सिविलाइजेशन, हम लोग इतना लो लेवल गिर गए क्या? एंड व्हेन आई वो दुख हो रहा है कि सर हमको बोलने से भी ठीक ओके है, फाइन है, लेकिन yeah. व्हाट हैज माय फादर Yeah. डन टू यू, Yes, yes. राइट? हु राइट्स दैट मैन? कम ऑन, हम लोग इतना गिर गए हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स? सो हैव यू एवर फेस दैट? आपको कोई बोला है ऐसा कभी, लाइक कभी भी you got rejected Yeah, when you obviously. rejected someone? Obviously, इतना तो, क्योंकि मेरा इतना किसी से खराब वे में कभी इंटरेक्शन हुआ भी नहीं है, तो वैसे तो लड़का लोग के साथ इतना झगड़ा वगैरह हुआ नहीं, तो आई बहुत कम ही सुनने मिला, बट सुनने तो मिला है, दैट टू फ्रॉम समवन हु आई वाज इन रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप में था, तो उससे ही ज्यादा सुनने मिला. अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आगे हमको ऐसे बोले, ऑब्वियसली, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव नेवर गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि हमको कभी आप ऐसा बोलो करके. सो दैट वाज द थिंग. ये भी ज़रूरत है आजकल के ज़माने में, आपको देखना है कि हु इज़ ऑफ व्हाट कैरेक्टर. यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अल्टीमेटली आप ही अपने आप को बचा सकते हैं. सबसे पहले तो आप प्रिकॉशियस होना पड़ेगा. तो आई बिलीव दैट अपना आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है इस सिचुएशन के हिसाब से. बट या, आई यूज्ड टू गेट इट वही अपना एक्स से. So coming back to अभी relationship के बारे में बात ही कर ही रहा था, like I did not know this, of recently I have a problem with young girls. Yeah. I had a problem, I still have a problem with my father, Yeah. because of the trauma that he gave me and my family members. बचपन का dark trauma वही है कि मेरा पिताजी को मेरा माँ को मारते हुए देख रहा था. So मेरा हम लोग फैमिली फोटोज में मेरा मॉम हमको ब्रेस्ट फीड कर रहा है, लेकिन पूरा फैमिली फोटो है, लेकिन मेरा मॉम का ब्लैक आई है. So that's traumatic for me. Yeah, So I still have a very huge problem with girls getting abused, physically abused by their partners, Yeah. their husbands, their boyfriends. So I feel fortunate that I've never raised my hand on any woman, and I hope I never get to do that. Never वो दिन कभी मत ना आए. So उसके बाद मुझे पता चला कि ये trauma bonding, because like any girl, any woman who's in a very physically abusive वाला relationship में, so they get to उन लोग वहाँ से नहीं निकल पाता है. Yeah, So you as a woman, like what is this trauma bonding, and like how to cope with it? If you just ask someone who have not been through that, तो उसको थोड़ा जवाब देने तो तकलीफ होगा. But since I was there in that abusive relationship, I was almost for 5 years. ऐसा हो गया था कि I was in a relationship which was like that person was, my partner was verbally abusive and then physically abusive too. तो it was really difficult. I tried, no, हम ऐसा था कि शुरुआत में relationship में आएगा नहीं आएगा ऐसा वाला सिचुएशन था, बट somehow relationship हो ही जाता है करके. I knew that this guy was not the right guy, and then maybe dating him after 2 or 3 months, I decided that I'll have to get out of it. But मौका ही नहीं मिला. And then society में थोड़ा ऐसा था कि my parents obviously they were liberal, but when it comes to relationship वाला thing, थोड़ा टेबू है ये चीज़, जो people don't want to openly talk about it. But अभी थोड़ा साइड से सोशल मीडिया आने की वजह से we are getting awareness related to domestic violence, this and that. तो अभी जाके सबका माइंड थोड़ा ब्रॉड हो रहा है. Before that, इंटरनेट नहीं आने से पहले थोड़ा तो नैरो माइंडसेट था, that we'll have to admit ना. तो ऐसा कहते समय it was really difficult to even tell our parents that what I was going through, and I was afraid that what people will think, because तब ऐसा था कि what society will think. ये वाला I have gone through that वाला situation है. क्या दूसरा क्या सोचेगा ऐसा वाला चीज़, जो वो ढाल देता है पहले से. We have to live a really dignified life ऐसा सोच के, we have to maintain ourselves. वो सोच के जीते and then that guy was torturing me a lot. I couldn't even, ऐसा कि किसी को पता ही नहीं मेरा बहन भाई का अलावा, and they were like they wanted to tell my parents, but हम बताने नहीं देता था, ऐसा होता था. So it was really difficult actually. ये जो अभी after getting, I don't know how I made it. Last में तो ऐसा हो गया था कि I just want to, थोड़ा लंबा से ही उसका बताना चाहता है, because no one Yeah. has. Please heard do. about this, That's why I'm giving you this Yeah, opportunity. no That's one why I has brought heard the about topic. this. Yeah, and then I feel like that, and I realized that it was not only me who was going through that. There were many women who are still in domestic violence वाला situation ना. It doesn't matter कि अब सिर्फ अभी girlfriend boyfriend है या फिर शादी हो गया है. If your partner is abusive, it's better you get out from there. Doesn't matter कि अभी एक बार ही हुआ या फिर 2 बार हुआ या फिर बहुत साल हो गया है.
ऐसे चलता रहेगा, that's not the way how a relationship should work. तो ऐसा करके it was really हम ऐसा कहते हैं कि at one point I was like I have no one to seek help from, and then ऐसा हो गया, ऐसा बोल नहीं पा रहा, I did not have the voice because I was not fully educated at that time. इतना educated तो बिल्कुल भी नहीं था, since government school में था, और फिर इतना awareness भी नहीं था. तो फिर but after that when I went for my further studies bachelor's के लिए, there I wanted to actually pursue political science, but ऐसा हो गया था कि father principal पता नहीं उनको लगा होगा शायद से it's better if I pursue English honors. तो ऐसा करके when I took up that course I got to read about feminism, कैसे women लोग सफ़र करता था and then how they came out of it. तो that was really motivating. इसीलिए बोलते कि पढ़ाई ज़रूरत है. It's not कि आपको धनी ही बनना है. It's not that you have to progress in some field, but अपना rights का बारे में जानना, like you know how to, you get empowered as well. Confidence भी एक आ जाता है. So that what happened, that English course somehow helped me in knowing that what feminism actually is, and then women empowerment kya hai, and then what I'm going through is not right, and I need to stand up for myself, otherwise no one is going to do that. जब तक आप खुद रेडी नहीं अपना को मदद करने के लिए, no one will be able to help you. जितना चाहो वो लोग मदद करना चाहो, they won't be until and unless you decide first. तो ये situation हो गया था. तो I'm thankful to that father and that English course as well. उसकी वजह से, and then I realized that I'll have to fight. और इतना success stories जब पढ़ के आ गया था तो एक confidence आ ही जाता है. It's like हमको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है. Society वाला जो सोचो ये सोचो. Because when I'm suffering, when I'm getting beaten, when I'm getting abused by my guy verbally and physically, no one is there to help me. I'm dying here. एक point ऐसा गया था कि what's the point of living if I'm going to continue with this life? It's better to just तो ऐसा हो गया था. And then I realized that हम अगर मर भी जाएगा तो no one will, ऐसा हो गया कि no one cares. Parents हर देर तकलीफ होगा वो अलग बात है, उन लोग का लॉस होगा, बट जो सोसाइटी के हम लोग इतना सोच रहा है, जो सोसाइटी वो लोग क्या सोचेगा, वो लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. दे इंटरनली दे डोंट नो, दे आर ओनली जजिंग व्हाट वी आर लेटिंग देम जज. तो बस जो ऊपर ऊपर देख के कमेंट करने वाला, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट देम ना. तो बदली अच्छा वे में तो सोचना है वो अलग बात है, बट जब ऐसा हो जाता है तो दे also can't do until unless we do something. तो तब ऐसा हो गया था कि I'll have to come out of it. तो ऐसा करके then parents I confronted it to my parents and they were like, तब ऐसा हो गया था. तो उन लोग को हम डर डर के नहीं बोलता था, लेकिन लास्ट में ऐसा हो गया था कि when I told them about it, they were like so cool, and then they were the one who went to his parents. फिर बात किया, तभी भी नहीं माना लड़का को, तभी भी नहीं माना. But somehow ऐसा करके जैसे तैसा करके but निकल के तो हम आ गया, and this is my second life. इसीलिए now I'm like अब जो सोचना है सोचो. I live my life until unless my actions are inflicting any कैसा बताएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं करा रहा है exactly. it's affecting you negative way में, तो I live my life. That's the only motto since then. मेरा बस लोग क्या सोचेगा, लोग सोसाइटी क्या जज करेगा. They do not pay our bills, right? They do not pay our bills. They do not clothe us. They do not do not put food on our table. It's But us, at the right? same time, yeah, but itna to sense of responsibility is there in me that I have to be a good example. That's there in my mind. So yeah, You're already a good example. You're already a good. वही है बस just trying to live a life positive. I only want to be surrounded by positive people, and then बस वही है, खत्म करना ना. यही hypocrisy यही सर यही हिपोक्रेसी को हम मतलब लोग को मतलब जब ऑडियंस लोग मतलब सोशल मीडिया में ट्रोल करता है, जैसे कि आप लोगों का यू हैव अचीव्ड सो मच इन सच अ यंग एज, इतना सारा अचीव कर चुका है. Like now I got to know that you went to New York representing our state, and you were former Miss Arunachal. You are an accomplished. You played nationals too, right? Yeah, Badminton. I did. और वहाँ पे एक है बंदा या बंदी जो घर पे कुछ नहीं किया, लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन वो just because उसका 300 रुपया 150 रुपीस का रिचार्ज है, and she'll keep or he'll keep writing. Like पहले आपका लेवल तक आपने जो अचीव किया है उसका सामने तक तो आ लो पहले ना, या तो आपका जितना नहीं उनसे भी उसका आसपास तो आ लो. और यही बात बोलने के लिए फिर हमको ट्रोल करेगा. But who gives a shit, right? Who gives a fuck कि लोग क्या बोलेगा? The truth has to be told. ना मेरा बोलने का, I think like you said in the beginning, any person who has accomplished something in his her life, जो मतलब a person of focus and purpose, हमको नहीं लगता है कि उसके पास टाइम होगा कि मतलब किसी को अरे नादे क्या कर रहा है, ताबियो क्या कर रहा है, समझ रहा है. उन्हें क्लोज वंस के लिए टाइम हो सकता है, क्लोज वंस के लिए टाइम हो सकता है कि नादे आजकल क्या कर रहा है. but sir, yeah,
I feel like I have long way to go, and Mm. I've just started my life. अब इतना achieve क्या बोल रहा हूँ? No. Why? See, for me, मेरा life का एक ही purpose है. Inspiration can come from Everywhere, yeah. everywhere, right? I can be inspired by a rickshaw puller. Yes, I can yes. be inspired by a tempo driver. Yes. So inspiration cannot be हम लोग सिर्फ शाहरुख खान, सलमान Yeah, खान उन लोगों को सिर्फ देख के इंस्पायर नहीं होना है. हम मेहनत तो ये See, सब भी करते हैं. आपका जब आप जो उम्र में आप जब नेशनल्स खेला होगा, I don't think हम क्या कर रहा था होगा. I think हम यहाँ दारू पी के घूम रहा था. I'm pretty sure दारू पी के रात को नशा होके घर आ रहा होगा. I think I must have done that. But you on the other other end, आप इतना कम उम्र, you were playing nationals. So that's an accomplishment and that is an inspiration for me. So, but then again coming back, let's come back to the hypocrisy of women. लड़की लोग औरत लोग क्यों सड़क पे पॉलीगैमी के अगेंस्ट नहीं उतरता है? Oh. So because this, I suffer from this. Yeah. मेरा dad is a polygamous person, so उसके पास 3 wives है. I being the first का बेटा हूँ मैं. So polygamy से इसमें दोनों गलती है. लड़का भी गलती है, लड़की भी गलती है. मर्द भी औरत दोनों का गलती है. लेकिन इफेक्ट मर्द को नहीं होता है. इफेक्ट औरत को होता है. The first wife. And the hypocrisy is the second wife comes in, फिर the husband decides कि हम third लेगा, जैसे कि मेरा केस में. So मेरा mom first था, वो आया, second आया. Second आने के बाद जब वो dad जो third लेने के लिए कर रहा था, फिर ये second वाला जो मेरा mom के पास आके बोलता है, चलो इसको झगड़ा करेंगे, ये third वाला को आने नहीं देगा. And you know what my mom said? It seems तुम आया था, third वाला आने दो. अभी हमको क्या problem है? So मेरा question ये है कि do you believe this old age adage कि औरत ही औरत का दुश्मन होता है? Like do you believe that? Because I'll be very honest. अब recently एक interview किया है अरुणाचल मिरर के साथ. Oh yeah. हाँ, so उसी में हम comments देख रहा था. लड़का लोग से ज्यादा आपको गाली देने वाला लड़की लोग था. आपको क्या मोटिवेट करना, encourage करना होता है, लड़की लोग ही आपको गाली दे रहे हो हमें. I was just looking at the comments and I was like, come on, yeah. एक लड़की ही दूसरा लड़की को जो कि इतना बेचारा अच्छा अचीव कर चुका है, and then I know you as a person, you are such a good human being, I'll say. लेकिन वहाँ पे सोशल मीडिया में आके आपको ही बोल रहा है ये है वो है, समझ रहे हैं? So and then why I am asking, like coming back to that polygamy वाला stuff, ये long standing issue है हम लोग अरुणाचल में, ठीक है? And I'm the one prime example जो सफर किया है बचपन से. हमको लगता है कि मर्द लोग तो इसका आवाज उठाएगा नहीं. हमको लगता है कि क्यों स्ट्रीट्स में औरत लोग पूरा उतर नहीं जाते हैं, क्यों सिविल सेक्रेटरीट का आगे में धरना नहीं करते हैं. हम तो सोचते हैं कि कोई औरत आगे सेल्फ इमोलेट करो, सैक्रिफाइस करो अपना लाइफ को ये कोस के लिए. थिंग्स विल चेंज. वो पूरा अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट से औरत लोग आके ईटानगर में धरना करो, स्ट्राइक करो ये पॉलीगैमी के अगेंस्ट में. लेकिन औरत लोग बात नहीं करेगा क्योंकि सेकंड थर्ड में कौन जाता है? औरत ही जाते हैं. So why, where do you see the reason कि मतलब क्यों नहीं आते आगे? I'll tell from my point of view. Yeah, please. इतना पहले पॉलीगेमी का इशू को इतना हम लोगों को भी पता नहीं चलता था, because we were used to it, because we have culturally inherited that tradition. ऐसा होता कि ऐसा हो गया था कि हाँ मेरे तो 3 दादी माँ है, तो it was like really a normal thing. It was really a normal thing to talk about it. तो ये पॉलीगेमी टर्म जो नेगेटिव है करके समझ ही नहीं आता था. But जैसे आपको बताया, as we got educated, तब अभी जैसे कि अभी पूरा हो रहा है, अभी था कि हाँ पॉलीगेमी का ये वो. Now we are realizing that हाँ जो अभी जो पहले से हो गया, that time actually it was the need of our, because वो लोगों को ये करना होता, they need man power, and then तो ऐसा करके ऐसा था history back then when we ask कि आप क्यों करते थे. तो I feel like that now it's no use. Yeah, it is of no use now, I believe, क्योंकि पॉलीगेमी पहले तो कुछ रीजन था, अभी तो किसी का रीजन नहीं है. And that time they were not educated ना, अभी तो सब educated हो गया. And then everyone की सब चाहते कि मेरा एक ही लड़का हो, लड़का भी चाहते कि मेरा एक ही लड़का हो. अभी तो ऐसा हो गया सिचुएशन जो, but polygamy still isn't it is existing. तो and we know repercussions क्या है उसका, consequences जो recently इतना न्यूज़ चल रहा है अभी. तो I was really concerned. Actually, I wanted to talk about it. अच्छा अभी पॉइंट को निकाल देने. I was supposed to make a video on it ना. तो वही हम सोच रहे थे कि क्यों अभी just as सती प्रथा was there, people used to glorify that before. But do we glorify it now? We do not. No. तो जिस तरह से सती प्रथा has been outlawed, I believe that polygamy should be outlawed too. And then I'm happy to see that अभी थोड़ा हम लोग का जो like leaders उन लोग का भी आँख खुल रहा है. They are also trying to work on it. I believe in future
polygamy ban हो जाएगा. If not, then I'll as a person individual I'll also make sure कि जहाँ भी हमको मौका मिलता है to speak against polygamy I'll definitely be there. And then अगर कोई भी organization को support मिलता है मौका के लिए क्यों रुकना है आप? मौका in the sense एवरीथिंग स्पीक आउट करना है आप लोग. का वीडियो बनाने ही वाला था, अभी पूछ दिया हमको. एंड देन आई डिड रिसर्च आल्सो ना कि अच्छा पोलीगेमी इतना कि लाइफ बर्बाद कर रहा है. नॉट ओनली वो लड़की लड़का दोस हु आर इन्वॉल्वड, राइट, मेन एंड वुमेन, बट आल्सो द चिल्ड्रन, दे आर सफरिंग टू. या ऑफ कोर्स. जैसे आप भी आपका भी स्टोरी को पता है, यू आर आल्सो गोइंग थ्रू इट स्टिल. आप सोच के देखो, आप आई स्टिल कैरी दैट बैक. या so जब इतना कुछ हो रहा है, we know that what's the negative impact of it, why don't we just get done with that. तो वो सोच के I did some मेरा research. क्वेश्चन वो है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम आप ये बात लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग कब आएगा कब आएगा? सी हम लोग का अरुणाचल या मतलब बाकी स्टेट से नागालैंड तो रिसेंटली उन लोग का हिस्ट्री में 2 एमएलए बनाए लेडी. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नागालैंड. अरुणाचल ये चीज में बहुत लिबरल है. वी गिव Yeah. इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन. yes yes अब पता नहीं सोसाइटी वर्क्स ऑन वुमेन. औरत को हटा दो, हम लोग का सोसाइटी क्रम्बल हो जाएगा. हाँ. लेकिन मेरा बोले वी हैव लेजिस्लेटर्स Yes, इन असेंबली, फीमेल लेजिस्लेटर्स. उन लोग बिल टेबल क्यों नहीं करते? और लोग क्यों हक के लिए इसको हटाना ये टॉपिक हो? तो आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि आप लोग कब Yeah. सड़क पे उतरेगा? so some of them are aware now. अभी धीरे धीरे अभी सब आ रहा है. we are getting united. आप शुरू कराओ रेवोल्यूशन for sure sir, for sure. प्लीज. आप वहाँ पे आप हंगर स्ट्राइक करो सिविल सेक्रेटरी के आगे में. I'll be there. या पोलीगेमी का आउटलॉग है. हाँ, और लोगों ने आप हंगर स्ट्राइक करो, फास्ट अनटू डेथ करो. आई वांट वुमेन कम फॉरवर्ड, स्ट्रीट्स पे उतर जाओ यार, इसके बारे में लड़ो यार. फैमिली सफर करता है. आप बहुत अच्छा बात बोला है कि एक समय था पूर्वज, हाँ, हम लोग का फोर फादर्स लोग, उन लोग पॉलिटिकल अपना ये फैमिली को बढ़ाने के लिए करता था. बट लाइक यू सेड वी डोंट नीड इट एनीमोर. अभी के समय में अभी का प्रेवलेंट है ये चीज. लेकिन लोग स्पेशली ना, हमको लगता है कि अभी मैं एक ही बात बताता रहूंगा. women should speak more on that. या women should speak more on that. क्योंकि women ही सफर करते हैं सबसे ज्यादा, and their kids. आप लोग सुन रहे हैं ना. And yeah, coming back to the hypocrisy again, huh? So, you know, हम लोगों का नॉट प्लेन मेनलैंड इंडियंस लोग, उन लोग माँ बहन को गाली देने के लिए बहुत इजी है. उन लोगों का बात में माँ बहन निकलता है. ठीक है. एंड ऑल थैंक्स टू हम लोगों का यहाँ बाहर से जो आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बाद यहाँ पे थैंक यू फॉर योर सर्विस आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस. लेकिन उन लोग जब बात निकलते हैं, माँ बहन को गाली बिना नहीं निकलता है. और हम लोग उसको सिनेमा के थ्रू भी ग्लोरीफाई कर दिया. अभी एक ट्रेंड बन गया कि अरुणाचल में लड़की लोग बहन चौथ मादर चौथ मतलब इजिली. आप कन्वर्सेशन भी सुनो, आप कोई बार में जाओ, पब में जाओ, पब्लिक में दोनों दोस्त झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन बहन चौथ मादर चौथ. तो हाउ डू यू एज अ वुमन टेक इट? एंड मतलब लड़की लोग इसको शुरू कर सकते ना. माँ बहन को गाली दे, आप अपना ही खुद का माँ बहन को गाली दो, लड़की हो के आप बेटा को गाली दो, भाई को गाली दो, पिताजी को गाली दो. लेकिन अभी वुमेन ही उसको प्रमोट कर रहा है. सो एंड आई सी दिस ट्रेंड अमंग द यंग गर्ल्स इन अरुणाचल प्रदेश, व्हिच आई हैव हर्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम्स. लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लाइक क्यों, व्हाई? As a person, I've never used those kind of words except for जब हमको कोई बोलेगा then only I'll say. But ये लेकिन बोला तो है ना. नहीं बोला in the sense yeah, वो कुछ कभी ऐसा होता है, हद से ज्यादा ही चला जाता है. When you are saying तो हम भी कम नहीं, I can also हम भी गाली दे तो सकते मेरा हैं. बोलने का मतलब ये है कि आप अभी उसका use बहन करते को हैं. मत बोलो, आप Yeah, yeah. बेटा को, भाई को, पिताजी को बोलो. हाँ. अब वो वाला चीज है. But later on I realized that तब का बात था वो. तो अभी तो I'm also realizing that I realized that कि ये गलत है. It's not good. And then as a person, अभी तो बहुत साल हो गया कि हम कभी ये सब वर्ड यूज ही नहीं किया. And I know that वो वर्ड what it means पहले तो मालूम नहीं होता था. पहले तो सब बोल रहा है, हम लोग भी बोल देगा. तो जब ऐसा बताइए कि when you get educated, then you realize things, right, कि क्या गलत है क्या नहीं है. तब तक तो हिंदुस्तान ने जो सीखा है, जो देख रहा है वो बोल देता था. अभी जब पता चल रहा है, and then since then जब से पता चला है, I've never used it. And then अभी now का it's अभी का yeah, ट्रेंड to the बन रहा है girls. ये हम लोगों का यंग I don't personally use it. लोगों के बीच में. I don't personally use it. तो अभी इसका थ्रू I only if possible यही मैसेज दे सकते हैं कि जो गाली है एक बार आप अच्छा से सुन लो कि किसको गाली दे रहा है. आप भले लड़का को दे रहे हैं, किसको ऊपर डायरेक्टर है. Just realize that and afterwards तो आप ही का ऊपर है डिसीजन लेना. एग्जैक्टली. मतलब yeah. ये तो ऐसा नहीं हो गया एक लड़की ये सब माँ बहन को गाली देना, वो तो अपना आईना में खुद को बोल रहा है ना. इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ना. आप ही माँ है, आप ही बहन है. सो it really feels safe. मैं नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं बोलता हूँ. Yeah. क्योंकि इतना इम्बाइब हो गया, इतना कंडीशनड हो गया, थैंक्स टू आप मेनलैंड इंडियन ब्रदर्स.
और उन लोगों को थैंक्स टू सिनेमा, थैंक्स टू बॉलीवुड, सो हम लोग भी मुंह से निकल जाता है, लेकिन लाइक यू सेड व्हेन वी सी द क्रक्स ऑफ इट कि कितना गंदा गाली है, मीनिंग जो तो अभी भी आई फील हैप्पी कि जब एक जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जब मैं होस्ट कर रहा था, सो मिलियन इंडियंस भर्ती आता है, सो उन लोगों का कन्वर्सेशन नॉर्मल कन्वर्सेशन में माँ बहन से शुरू करता है, शुरू करता है। सो स्टेज में उतने का मैंने वो भी बोला कि यहाँ पे हम लोग एज अ ट्राइबल सोसाइटी, हम लोग एज अपतानीज, निशी, आदि, गालो, तागिन, जो भी हो, हम लोग जितना अरुणाचल एज अ ट्राइबल सोसाइटी है, माँ बहन का गाली को हम लोग बहुत ऑफेंसिव में लेता है। या सो प्लीज आप लोगों के लिए वो बहुत यूज टू Yes, है, yes, लेकिन प्लीज यहाँ पे आप मत बोलिए, क्योंकि कल को आप बोल रहा है, आप दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुनेगा ही और शी विल गेट ऑफेंडेड एंड माइट चार्ज यू, एंड बाद में उसमें मत बोलना। मत बोलो। तो उसके बैक स्टेज में एक बुरी औरत आता है मेनलैंड इंडिया से, वो मुझे आशीर्वाद देता है, बेटा थैंक यू वो बात बोलने के लिए। हम लोगों का तो क्या बोलेगा, हम लोगों का तो सुबह का शुरुआत ही चाय से नहीं, उससे माँ बहन का गाली से शुरू होता है। सो मेरा दुख ये है कि यहाँ का जो अभी का जो हम लोग का इतना सुंदर सुंदर लड़का लड़की लोग, स्पेशली लड़की लोग ही ये माँ बहन गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, इतना कूल अच्छा ड्रेसिंग करेगा, लाइक समझ गया सर। you get the point, right? I got it, I Yeah. got it. Now it's up to them. Just before saying it, just realize कि उसका मतलब क्या है, और अगर उसको आप एक बार सोचने लग जाएगा, तो I believe आपको मुझसे वो गलती से भी नहीं निकलेगा. Ultimately, it's coming back to you only, Yeah. and it shows your mentality as well. That's what we can say. True. इतना normalize नहीं करने से ठीक है. गाली Exactly, गाली normalize, हाँ, गाली तो गाली होता है. नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मतलब बिकॉज आजकल क्या हो गया, इसको एज अ कूल फैक्टर ले रहा है। Yeah, yeah. इट्स नॉट कूल एट ऑल ना, इट्स नॉट कूल एट ऑल, नॉट कूल एट ऑल। एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी आप क्राउन को दे दिया है, Yeah. अभी यू जस्ट it's not even been a week. I think it's been a week, right? Week क्या? It's just been a week, 1 week. You have given your prestigious crown, passed on to the next rightful Miss Arunachal. yeah, Miss Arunachal. And from now on, abhi se, where does your journey take you forward? Obviously, I'm not going to stop here. I'll keep on trying. I cannot promise that हम ये कर लेगा वो कर लेगा, but I can promise one thing, that I'll keep working. It's not that I'm going to stop here. जितना मेहनत पहले से करते आए, I'll continue with that. It's not that I've achieved this, then this is the end of it. It's not. It is just the beginning. I've always said पहले से, this is just the beginning. अभी तो असली शुरू हुआ है करियर का चीज जो. So yeah, definitely I have future plans. अगर hopefully it turns out good, then आप लोगों को भी देखने मिल जाएगा होगा. And we are wishing you the best. And Thank you. and like I said earlier in the show, I know, because I know you as a person, and Yeah. I've seen your caliber. I am pretty damn sure that you will achieve what you have put your heart into. And me as a person, all I can say is good luck and best wishes. Thank you. And may we keep hearing more from you, that you have achieved this and that. And may you keep growing. Amen. Amen. So Amen. be it. Amen. And thank you for coming to this show, because I had approached a lot of girls. I think they were afraid. They did not want to, I don't know, whatever their reasons. Their own reasons. Yeah, I'm nobody to judge. But then thank you for coming, because I knew when I called you, I knew you would not say no, because I know you as a person. बोला ना, दिल में रखता दिल में नहीं, जो बड़ा मुंह में। हाँ। So Never always, met- do not lose the charm. Like, that's the most beautiful thing about you. Thank you so much for coming, Nadak. And that was Nadak Nabam for you. And I do not know who's the next guest. Hopefully it'll be more uncensored, unfiltered. Thank you for watching. And बस थोड़ा troll थोड़ा कम करने शुरू करें लोग में. Like, do something in your life. And yeah, I would have offered you my favorite drink. लेकिन आप तो दारू वारू नहीं पीता है, so I can offer you a coffee. So Thank let's you so go have some coffee. Thank you so much. Thank you so much for having me, sir.